Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 12 for Human Resource Development and here we will discuss professionalization of HRD. The topics to be covered are Introduction, 30 years of HRD in India, what is a profession, profession and occupation, characteristics of profession, HRD profession and professionalism in India, and has Indian HRD attained the status of a profession? Now, first is introduction. Parikh and Rao in 1975 outlined a philosophy for the new HRD system, and some of these principles include HRD systems should help the company to increase enabling capabilities. परीक एंड राव ने कुछ फिलॉसफी आउटलाइन की थी, प्रपोज की थी नए एचआरडी सिस्टम के लिए, और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स में से पहला है कि एचआरडी सिस्टम जो है किसी भी कंपनी के लिए हेल्पफुल होना चाहिए कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सके. देन एचआरडी सिस्टम शुड हेल्प इंडिविजुअल्स टू रिकोगनाइज देयर पोटेंशियल. इंडिविजुअल्स को हेल्प करे कि वो अपने पोटेंशियल और अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझ सके. HRD systems should help maximize individual autonomy and they should facilitate decentralization through delegation and shared responsibility. So HRD में empowerment होनी चाहिए ताकि responsibility को share कर सके और decentralize कर सके अपने system को. Also, HRD system should facilitate participative decision making. HRD system should attempt to balance the current organizational culture along with changing the culture. Then there should be a continuous review and renewal of the function. जो functions कंपनी में चल रहे हैं या जो processes चल रहे हैं उनके बीच में balance होना चाहिए, environment अच्छा होना चाहिए और साथ में उनकी continuous evaluation होनी चाहिए. Then 30 years of HRD in India. After L&T accepted the recommendations in full and started implementing, the State Bank of India, that is SBI, decided to use the integrated HRD systems approach and decided to create new HRD department. जब L&T ने ये एक्सेप्ट कर ली थी रिकमेंडेशन जो परीक एंड राव ने प्रपोज की थी, उसके बाद SBI ने एक इंटीग्रेटेड HRD सिस्टम निकाला और उसके बाद उसके लिए एक नया HRD डिपार्टमेंट क्रिएट किया. And by mid-80s, HR has become an accepted role and most organizations have changed their personnel, training and other related functions to HRD. Then, what is a profession? The Webster Dictionary defines a profession as an open declaration of a belief or opinion. कि ओपनली हम अपने बिलीफ और ओपिनियन को कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट इज प्रोफेशन. एंड प्रोफेशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सिंपल कलेक्शन ऑफ पीपल डूइंग सिमिलर वर्क और अदर नॉन प्रोफेशनल ग्रुप्स बाय देयर एफर्ट्स टू डिफाइन expected norms of ethical behavior among their members. Next is profession and occupation. Webster's define occupation as that which occupies or engages the time and attention, the principal business of one's life. वेबस्टर में ऑक्यूपेशन को डिफाइन किया गया है एक ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ जो टाइम और अटेंशन एंगेज कर रही है और ऑक्यूपाई कर रही है किसी भी इंडिविजुअल की, और एक प्रिंसिपल बिजनेस किसी की भी लाइफ का. एन ऑक्यूपेशन कैन बी थॉट एज फॉलिंग समवेयर along the continuum of professionalism. The continuum being made of common traits in definitions of profession. The core characteristics of profession are a prolonged specialized training in a body of abstract knowledge and a collective or service orientation. So profession के core characteristics हो गए कि एक proper specialized training किसी भी knowledge के अंदर या फिर एक collective और service orientation. Next is characteristics of profession by Gooden. So Gooden ने कुछ characteristics बताए थे प्रोफेशन के, जैसे कि प्रोफेशन डिटरमाइंस इट्स ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, अपने स्टैंडर्ड्स बताता है एजुकेशन के. प्रोफेशनल
Practice is often legally recognized by some form of licensure. Licensing and admission boards are manned by the members of the profession. Most legislation concerned with the profession is shaped by that profession. The occupation gains in income, power, and prestige, ranking, and can demand high caliber students. Then, the practitioner is relatively free of lay evaluation and control. Practitioner जो है वो evaluation और control कर सकता है. Then the norms of practice enforced by the profession are more stringent than legal controls. Members are more strongly identified and affiliated with the profession than are members of other occupations. The profession is more likely to be a terminal occupation. So profession एक तरह से terminal occupation होती है. Then next is characteristics of profession by barber. A high degree of generalized and systematic knowledge. Systematic knowledge होती है और generalized knowledge होती है. Primary orientation of the community interest rather than to individual self interest. So primary orientation होती है community interest की, ना कि एक individual के interest की. A high degree of self control of behavior through codes of ethics internalized in the process of work socialization and through voluntary associations organized and operated by work specialists themselves, and it is a system of rewards. Then next is elements of professionalization. Now there are structural elements like specialization, centralization, and standardization. Specialization is the exclusive nature of group activity. कोई एक किसी में स्पेशलाइज्ड है, उसका एक्सक्लूसिव नेचर जो किसी और में नहीं है, किसी भी ग्रुप का. देन सेंट्रलाइजेशन, दैट इज द लोकस ऑफ अथॉरिटी सैंक्शंस मैकेनिज्म, कि एक का लोकस है सेंट्रली पॉइंटेड. देन स्टैंडर्डाइजेशन, द कंट्रोल ऑफ नॉन ऑक्यूपेशनल बिहेवियर, जो नॉन ऑक्यूपेशनल बिहेवियर है उसका कंट्रोल इज स्टैंडर्डाइजेशन. देन contextual elements, which includes spatio-temporal dimensions, size of occupational group, resources of occupational group, and group relations. Then activity element, which contains the goals of occupational group, the role of individual members. Next is educational element, which includes occupational intelligence requirements, basis of systematic theory, institutionalized educational process, length of training, and cost of training. Then ideological element, which is personality involvement, sense of group identity, group culture, status, and socialization process. Then behavioral element, which includes code of conduct and evaluation of merit. Next is professionalism. Turner and Hodge proposed 4 areas of concern in study of professionalism, and they are degree of substantive theory and technique. So इसमें क्या है, a profession should have a set of abstract principles which should be organized into theories, set of theories, or at least a complex web of theoretical orientations. So सब्सटेंटिव थ्योरी और टेक्निक में क्या है कि एक प्रोफेशन जो है वो एक सेट होता है एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स का, जो कि एक थ्योरी में ऑर्गेनाइज्ड होता है या सेट ऑफ थ्योरीज में ऑर्गेनाइज्ड होता है या फिर कोई थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन होती है उसकी. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ मोनोपोली. द प्रोफेशन शुड क्लेम अ मोनोपोली ओवर द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इन विच इट ऑफर्स सर्विसेज. सो प्रोफेशन जो है वो एक मोनोपोली क्लेम करता है अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर या फिर जो अपनी सर्विसेज जो वो ऑफर कर रहे हैं. देन डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रिकग्निशन. पब्लिक रिकग्निशन इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोफेशन. पब्लिकली रिकग्नाइज करना वो हो गया एक्सटर्नल रिकग्निशन, और ये हर प्रोफेशन का एक
बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. बट पब्लिक रिकॉग्निशन इज़ अ मल्टीफेसेटेड फिनोमिनन. देर आर सेवरल पॉसिबल पब्लिक्स who to whom members of an organization may address themselves. Next is degree of organization. Two general approaches of the organization of professions and professionalizing occupations have been developed. First is formal organization approach and second is community approach. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच में एम्फोसिस होता है ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिक्स पे, मैकेनिज्म पे और टेक्निक्स पे. फिर कोडिफिकेशन पे, स्टैंडर्ड्स को कैसे कोडिफाई करेंगे, और फॉर्मल कंट्रोल ओवर मेंबर्स. एंड नेक्स्ट इज कम्युनिटी अप्रोच, और इसमें एम्फोसिस होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे कि कैसे रिलेशनशिप जो है किसी भी प्रोफेशनल्स के ग्रुप की, उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिटी में कैसे रिलेशनशिप्स हैं और एक सोसाइटी में कैसे रिलेशनशिप्स हैं. देन नेक्स्ट इज HRD प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म इन इंडिया. It is against these criteria an attempt is made to examine if HRD can be identified to have attained the status of a profession in India. An attempt is made to review the existing body of knowledge in HRD. So इसमें हम एक एक करके we will discuss these topics like knowledge base of HRD in India, education and training facilities of HRD in India, legal recognition and standards of HRD profession, licensing requirements, services offered by the profession and their availability elsewhere, sense of identity and belongings in the profession, that is HRD community, code of conduct and ethics, public acceptance and well-defined member roles, and altruistic service, and then pursuit of material gain. Now first is knowledge base of HRD in India. Now here the positive points include there is a well developed knowledge base in HRD. इंडिया में एक well developed knowledge base है HRD का, and there are at least over 50 books in HRD that have come into existence in the last 2 decades. And the negatives include although there are a number of books, they lack sound theoretical base. उनका theory ठीक नहीं है और basics clear नहीं है. And the balance is, on balance, while there is a good degree of knowledge base, there is more specialization and without adequate preparation into the basics like human psychology, personality development, and learning theories. Then next is education and training facilities for HRD in India. Positives include in the last 1 decade a number of institutions have started certification programs in HRD. Masters and diploma programs are common. सो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस ने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में. नेगेटिव्स आर द कोर्सेज आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड. समटाइम्स देयर इज very inadequate emphasis on HRD. And the balance is the education and training facilities have a long way to go. There is an urgent need to standardize the academic preparation and curricula. Now the next is legal recognition and standards of HRD profession, that is licensing requirements. Strength is none. Weaknesses include existence of a large number of HRD professionals who are not qualified to be called as HRD professionals are not likely to allow any licensing program. So जैसे कि एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, उनको कोई स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड नहीं हुई है, तो HRD प्रोफेशनल्स होके भी दे आर नॉट सो क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज HRD प्रोफेशनल्स, तो इसलिए लाइसेंसिंग में प्रॉब्लम आती है. एंड द बैलेंसिंग सिचुएशन इज इट इज़ हाई टाइम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आर डिफाइंड एंड लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स आर मेड. सो HRD प्रोफेशनल्स के लिए स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने ज़रूरी हो गए हैं और लाइसेंसिंग अरेंजमेंट भी बहुत ज़रूरी हो गई है. देन नेक्स्ट इज सर्विसेज ऑफर्ड बाय द प्रोफेशन एंड देयर अवेलेबिलिटी एल्सवेयर. Strength is there are certain services offered by HRD professionals that cannot be offered by others. कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो सिर्फ HRD प्रोफेशनल्स ही ऑफर कर सकते हैं और कोई और नहीं कर सकता. Weaknesses include due to inadequate preparation in the past of some HRD managers and
inappropriate handling by them of basic human processes and excessive mix up of HRD roles with personal administration and HR management, HRD has got into disrepute. सो इनएडिक्वेट प्रिपरेशन की वजह से कुछ एच आर डी मैनेजर्स की इनअप्रोप्रिएट हैंडलिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और आ चुकी हैं. सो बैलेंस वुड बी अ मैसिव मूवमेंट ऑफ एजुकेटिंग दी पब्लिक इज़ रिक्वायर्ड कि पब्लिक को हम अच्छे से उनके बीच में अवेयरनेस फैलाएं, ये बहुत ज़रूरी हो गया है. देन नेक्स्ट इज सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस इन दी प्रोफेशन. Strength is HRD identity is well accepted in the country. HRD identity को accept कर लेते हैं हम. And weakness is the bondage and identity is not strong as admissions to these bodies are open to all without any qualifications and assessment of the appropriateness of the member. Balance is identity based on belonging to a profession or on the basis of expert knowledge rather than on the basis of payment of fee is needed. So expert knowledge के basis पे ज़्यादा professional आ जाता है, ना कि वो कितना fee pay कर रहे हैं. Then code of conduct and ethics. There is no code of conduct or ethics accepted and enforced for HRD managers in India. This is a sensitive profession as HRD manager can make or mark careers of a large number of individuals. So it is unfortunate that after so many years of development of this field, there are no code of ethics and values for HRD managers, and it is high time that the professionals bodies formulate and enforce the same. Then public acceptance and well-defined member roles. Now, the public recognition is a very important aspect and critical factor of any profession. The clients of HRD are organizations and their employees. Moreover, since organizations have not developed HRD as their most important part but a corollary, this recognition becomes difficult to achieve. So public recognition बहुत important part होता है किसी भी profession का, और जो clients होते हैं HRD के एक organization के लिए और उसके जो employees होते हैं वो HRD के main clients हैं. Then altruistic service and than pursuit of material gain. Though HRD values always emphasize on this issue, but there is no serious emphasis on the same. Emphasize करते हैं लेकिन seriously कभी इस matter में ध्यान नहीं दिया जाता, since there is no licensure and thus violation of this value have any effect on the professional status of an HRD person. Then, has Indian HRD attained the status of a profession? And the following are in favor of recognizing HRD as a profession in India. First is HRD in India. It has body of knowledge, though a lot more needs to be done to put all relevant knowledge together. HRD में को रिकॉग्नाइज किया गया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो अभी करना बाकी है. Then it has professional body, though the professional body needs to be more concerned about the professional and has to start playing gatekeeping role rather than say self-serving role of exchanging experiences. And it has a set of educational programs, though these need to be standardized. And last is has well-defined roles and competencies understood, though sometimes wrongly by the public. So educational programs हैं लेकिन उनको standardize अभी नहीं किया गया है, और roles और competencies well defined है लेकिन कई बार लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं. Then HRD in India. It does not have a standardized system of preparation of HRD professionals. It does not have a regulatory and licensing mechanism. It does not have a code of conduct, ethics and values accepted and practiced and regulated, and is still materialistic in orientation as is not public service oriented.
सो अभी भी एचआरडी में बहुत कुछ बाकी रह गया है इंडिया में उसको ठीक से स्टैंडर्डाइज करने के लिए। काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी ठीक से नहीं हुई हैं, जैसे लाइसेंसिंग मैकेनिज्म ठीक से रेगुलेट नहीं हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, और अभी भी वो मटीरियलिस्टिक सिचुएशन में ही है। Now there are some questions for you. First is highlight the development of HRD in India, and second is describe the steps needed to make HRD as a profession. That's all for this session. Thank you and have a nice day.